Good morning to all of you. Am I audible? Yes. So, in this session, I will discuss some basics of basic tips of interview preparation for OCS examination. Recently, notification आसी सारी कि from second week onwards, July second week onwards, third week, first week होते interview start हुआ को जाऊँ. So, जो notification आसी what is it all about? This is about interview or this is about personality test? What is this? Notification आसी interview ପାଇଁ आसी ना personality test ପାଇଁ आसी. You have already qualified prelims, expected to qualify mains. Then the third phase is personality test. There is a slight difference between interview and personality test. In interview, let's say your mains score will be analyzed and discussed with you. That is interview. And personality test, generally this is a questionnaire. Personality test, this is generally a questionnaire. Jodi subjective type ही पारे, descriptive type बा MCQ type ही पारे question. But OPSC एठी हमको subjective type रो question पचारे, analytical question पचारे. एठी हमारा mains रो जो result अच्छे से result is not discussed. Rather they judge our personality. So based on that they will give you mark. Then you are preparing. What are you preparing for? For you are preparing for interview or preparing for a personality test? Preparing for personality test. So personality test दवा पूर्व जानिबा दरकार what is personality. Personality कहले हम कोन बुझते. Personality is all about your psychology. What do you think? What do you perceive? Perceive means how do you see different things. Let's say there is a technological development. Let's say there is a technological development. And let's say we are talking about Mongolayan, we are talking about Chandrayaan. So how do you perceive this development in the field of space technology? What is your character? What are your attributes? What are your objectives? Whether you have a positive attitude, negative attitude, how do you see different things? How do you behave in a stressful situation? Whether you start solving different problems, taking it by taking some proactive action, or you wait for the authorities to instruct you to take some instruction. This is all about whether you are introvert or extrovert. What is your temperament? You have energy or you don't have energy. So personality ର basic characteristics বা basic attribute କ'ଣ? Now you should be organized. You should be consistent in your flow. ଯେମିତି start କରିଛେ ଆମେ interview जो flow रे जो energy ରେ same energy you should come out. Generally କ'ଣ ହୁଏ? People enter with energy, but when they are not able to answer questions by the board, they are disheartened. मन दुखरे फेरिबे बा मुह सुकई की फेरिबे. So एथरे consistency हमको देखिବାକୁ मिले. That is not a very organized way. Then causes your behavior and your reactions to others. What are your behavior and what are your reaction to the board? What are your behavior and reaction to the board? मन कर board कोटे question पचारछि हमको से question जणा अछि. तो हम अति खुशी हिजिबा सेठी. बा हमको जणा नाही. आमे पूरा मन दुख कर दोछि कि मु जानिनी बोर्ड मते काटी दबो कि कोन करबो. बा निज ऊपर किछि गोटे negatively emotional जिनसा हम expect करते. Let's say board asks you about your parents or about anyone else in the family. Let's say the family, that person is no more. सेठी हम सेटा को मन दुख रे कहउचे, मुह सुखै की कहउचे. So this is about
This is about how do you show your behavior among a group of people. What is your pattern of thought? What are your feelings that makes you unique? Because there are so many people in the interview. The first question always in an interview is why you should be chosen. କାହିଁକି ତୁମକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର? What is extra ordinary things that you have? What are the extraordinary things that you have? So you have to prove all these things in the interview itself. So personality test ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦଉଛେ, personality test means showing your characteristics, showing your behavior. How do you adjust to a situation yourself? What are your personal characteristics? What are your personal attributes that makes you unique? What are your interests? What are your objectives, drives? What are the values instilled in you? The self concept that you have, the abilities that you can do, the emotional pattern that you derive. ଏତିକି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ହିଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ପର୍ସନାଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ରିଭଲ୍ଭ କରେ। So most important aspect ହଉଛି ଏଥିରେ ଇମୋସନାଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ। ଇମୋସନାଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ ମାନେ how come you can control your emotions। आंसर आସୁଛି ବେଶୀ ଖୁସି ଯାଉଛେ, ଖୁସି ହେଇକି ଆନ୍ସର କରୁଛେ, ଆନ୍ସର ଆସୁନି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛେ, ବା ବୋର୍ଡ ହସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ବୋର୍ଡ ସହିତ ବୋର୍ଡ ମନେକର ଜୋରରେ ହସିଲା ଆମେ ବୋର୍ଡ ସହିତ ଜୋରରେ ହସି ଦଉଛେ, ବୋର୍ଡ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲା ଆମେ ବହୁତ ଜୋର ଡରି ଯାଉଛେ। ସୋ ये ସବୁ ଜିନିଷ ନ ହବା ଦରକାର। ତାহলে जो पर्सनालिटी टेस्ट आम दबाक जाऊे मन रख दिस इज नथिंग, दिस इज सिंपली अ बिजनेस बिटवीन यू एंड द इंटरव्यूअर। जो मैंने इंटरव्यू नौ से गोटे भल कैंडिडेट दरकार, आम गोटे भल जॉब दरकार। सो सिंपली इट इज अ बिजनेस। तुमको शो कर अच्छी कि आई एम द फिट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब और से साटिस्फाइड हवा दरकार कि जार इंटरव्यू आम नौ इज द बेस्ट कैंडिडेट आम ताकू ही नौ आ क्या नौ। सो दिस इज सिंपली अ बिजनेस, किसी डरबार ना, बोर्ड को डरबार कौन आवश्यकता ना। जहाँ जी क्वेश्चन पचार से क्वेश्चन आम दबा दैट इन अ प्रोफेशनल वे। डिमांड कौन कर ओपीएससी को फैक्टर को एट्रिब्यूट को आमटी देखुँ, को एट्रिब्यूट को आमटी खोजुची कि ओएस ऑफिसर होगा ओपीएस ऑफिसर होगा क्लास 1 सर्विस पाइबा। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इज कॉन्फिडेंस। यदि कॉन्फिडेंस नहीं, सेम आंसर बहुत जन कहते बट डिफरेंट मार्क्स इज गिवन टू ऑल ऑफ देम। जन को गोटे 5 दिया क्या 10 दिया क्या 15 दिया कहीं, बिकॉज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, द एनर्जी, द वे दे रिप्रेजेंट, द क्लैरिटी दे शो, जहां में कहूँ से क्लैरिटी रहा दरकार। देयर शुड बी नो एम्बिग्यूटी। क्वेश्चन पचरा होची जहां क्वेश्चन से पचार टू द पॉइंट आंसर दबो विथ क्लियर कट विजन। तो जहां भी को प्रोज ऊपर को कॉन्स ऊपर को गोटे टॉपिक रो मेरिट्स को डिमेरिट्स को सब ऊपर कहि हबो इन डिबेट, बट यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि जहां जो फैक्टर टा मु कहूची जहां पर मु डिस्कस करची दैट इज as per my knowledge and belief that is completely true. For example, board contradicts your view। तुम कहलो कि मुझे सर कहूँ बोर्ड कॉन्ट्राडिक्ट कर ना यही कथा नुहे से कथा, ताल से जगह पोलाइटली यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि as per my knowledge and my view I know up to this and I will try to educate myself, I will increase my level just after the interview is over, I will once I back to my home I will go through these concepts। So you have to insist the board or you have to create a perception that you are polite and whatever the board says you agree to it, even if in case of contradiction, even if you are 100% right, you know you are 100% right and the board is 100% wrong, still you have to be polite and you have to accept that once I back to the home sir I will be going through all these things। So confidence, clarity, most important thing। Personality, what is personality mu kahili already, you have to create a positive vibes inside the interview hall itself। So when a candidate enters to interview hall, just within 5 minutes 4 minutes they decide whether the person is get in or get out। so लोग चूज कि नहीं 4-5 मिनट भीतर डिसाइड हो जाए, योर मार्क्स इज डिसाइडेड विदिन 4-5 minutes and the rest what you answer or what you don't answer that has a less impact, less significance। so 20 number 15 number आगे पछ जदी हवा होता पे, but first 5 minutes is most important। so you have to show the energy in you, you have to show your objective, your passion towards civil service। then is management। Management means how do you manage time,
हाउ डू यू डू आई कंटाक्ट केमती आई कंटाक्ट करछो जने क्वेश्चन पचारछन्ती जे क्वेश्चन पचारथिबे जनरली कोन हुए बहुत जण कैंडिडेट थांती क्वेश्चन पचराओ से तळको मुहपति कहबे बा ऊपर को चाहि कहबे कांथर गोटे कॉर्नर को चाहि कहबे एमती करबोनी जे क्वेश्चन पचारथिबे डायरेक्ट आई कंटाक्ट करिवो आई कंटाक्ट करि कहबो फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट जे पचारि थांती बहुत जण कोन करंती ना जे क्वेश्चन बोर्ड रे धर 3 जण के 4 जण अछंती out of 3 or 4 members the person who asks the question generally समस्त आई कंटाक्ट तांकरी सहित करंती then what about the others जदि 30 सेकंड आंसर दउछ जे पचारि तंती आई कांटेक्ट तांको सहित अधिक समय रहबो 15 सेकंड रेस्ट 15 सेकंड अदर बोर्ड मेंबर मानको सहित हो रेस्ट 15 सेकंड अदर बोर्ड मेंबर मानको सहित हो सो दिस इज अबाउट मैनेजमेंट जदि लेट्स से किछि गोटे भूल हे जाउछ इंटरव्यू हॉल भीतर सेटा को हम केमती मैनेज करजे सो ये सब जिनसर इंपैक्ट थाए सो फर्स्ट 5 मिनिट्स इज मोर इंपोर्टेंट विद इन फर्स्ट 5 मिनिट्स दे विल जज योर पर्सनालिटी हाउ डू यू रेस्पोंड टू अ क्वेश्चन हाउ डू यू आंसर the way you explain मैं सीरियस है कि कोच हस्ती कि कोच बा कैजुअली आंसर दोच हां एमती हुए सेमती हुए एवळे कैजुअली आंसर दोच सो ये सब जिंस को हमको ध्यान रखिया पड़ियो हम कैजुअल हबार नै गोटे जिंस प्रोफेशनल वे रे रिप्रेजेंट करिवार अछि गोटे जिंस को हम सीरियस वे रे रिप्रेजेंट करिवार अछि एंड सीरियस माने एते भी सीरियस नुहे मन कर क्वेश्चन पचरा गला एग्जांपल थ्रू बुझौची बट मन कर क्वेश्चन पचरा गला if you will not qualify the civil service examination then what is your second option. So in general our answer होची कि sir I am well prepared, I expect the very best in this time, I have given my best, so I expect this time to be qualified. So I am in a positive vibe, I don't think I'll be I will not qualify this examination. So let's say ethic answer dela par this is a very generic answer, so specific answer to this question. So let's say यहाँ पर board पूर्ण तरह कोची, let's say there is a chance, let's say you are on not qualified, you are disqualified, then what is your next plan. तो तापर कोन करिवो पिला तो सिखि जाई छै घर ताको बुझाई समस्त कहचंती कहबो सेठी जाई कि मते एग्जाम मु क्वालिफाई करबी मैं से पूर्ण सेकंड टाइम पतला से कोच no definitely I will crack this examination, I am well prepared and this is my first and last option, this is objective aim and objective of my life. So ए टाइप र आंसर केबे भी हमें दबानी सेठी civil service is not aim and objective of your life, that rather this is a means to your aims and objectives. So means कोन ना हम ऑब्जेक्टिव होची मन करो लेट्स से सोशल स्टेटस, टू रीच दैट सोशल स्टेटस हमको आइदर यू गो फॉर पॉलिटिक्स और यू गो फॉर सिविल सर्विस, and politics is not cup of your tea, you cannot do politics in this earlier age, so it is better to go through civil service so you can work for people. So social status रो जोटी कथा आसुची that is better कि हम सेठी कहबा कि मते सोशल स्टेटस पे मु सिविल सर्विस जॉइन करछि, हमर ऑब्जेक्टिव टा को हम सेठी पूरा क्लियरली शो करिवार अछि कि एई कारण में मु सिविल सर्विस आसी। बट सेकंड टाइम बोर्ड कंपेल करूची कि जदि फेल हे जाउ तो एग्जाम रे ताहले कोन करबा, हम सेठी बाध्य करबानी कि ना मु क्वालिफाई करबी माने करबी, मु 100% क्वालिफाई करबी। रादर हमर आंसर एटी कोन हबो ना, यू शुड टॉक अबाउट योर सेकंड ऑप्शन कि आई एम अ प्रोफेशनल और आई विल गो फॉर सम क्लास 2 सर्विसेज और आई विल बी देयर इज अ प्राइवेट सेक्टर। तो एठी हमको देखिवार अछि दैट टू नॉट इन अ वेरी डिसहार्टेंड वे कि मु जदि न पाउची मु एटा करबी और जोड कामटा करूची कामटा एकदम खराब काम, से काम कले मोर किछि वैल्यू नै, से जिंस भी हम छेड़ देखिवार नै। इट कहवार अछि कि बियॉन्ड सिविल सर्विस देयर आर अ लॉट ऑफ स्कोप, ample amount of opportunities are there, private sector is growing up, in that I can go for a managerial post ba mu I will prepare for this service ba je tumar अच्छी ऑप्शन अच्छी है नेक्स्ट ईयर ପାଇଁ अच्छी और attempt अच्छी, so you can talk about the next attempt also. So I am well prepared for this attempt, if any unfortunate thing happens then I have the next attempt as well, in the next attempt I will definitely qualify. From this attempt I learned so many things, I have cleared prelims, I have cleared mains, I know how to structurally answer the questions, I attended the interview, from this interview I gained so much of knowledge, I can utilize my experience of pre-mains as well as interview in the next session, in the upcoming examination, upcoming notification, and I can crack this examination. So पॉजिटिव वे रे हमको जिंस गुडा को सब देखिबार अछि, कोन जगह हम नेगेटिव होवानी बा नेगेटिव वे रे जिंस गुडा को हम शो करबानी। बोर्ड जदि कंपेल करूची तले हम सेही वे रे ताको पॉजिटिव वे रे नबा, आ हम ताक विरुद्ध रे कॉन्ट्राडिक्ट करि कहबा नै नै मोर हबो माने हबो, नै नै मु पाइब माने पाइब, ए टाइप रा बिहेवियर को हम दूरे रहे। So this is about managing yourself inside the interview hall. So approximate timing interview ro hoची 20-25 minutes average time, so ato कम बेसी ही पारे depending on the instance, depending on the situation. So interview and answer varies from people to people.
सेति एटा टाइम आग पछ जनकर एक्सपीरियंस अछि जनकर एक्सपीरियंस नहीं लेट्स से फ्रेशर गोज विथ 21 एट द एज ऑफ 21 इयर्स बट एक्सपीरियंस लोक जाउची एट द एज ऑफ 35 36 so there is a huge difference between these two personality of these two persons so in the same way they will try to judge it so जहाँ को 21 वर्ष से तक एक्सपीरियंस ऊपर डिस्कशन करिवेनी जे 35 36 रे जाउची विथ एक्सपीरियंस दैट एक्सपीरियंस से कोन सिखि के आसी हाउ कम ही इज द पर्सन इज वैल्यूएबल फॉर एज अ सिविल सर्वेंट्स टू द गवर्नमेंट टू द स्टेट टू द सोसाइटी से क्वेश्चन आंसर दो कहबो सो से जगह रे डिस्कशन में हुए तो टाइम अधिक हो जाय पारे कहा को एजुकेशनल बैकग्राउंड रो क्वेश्चन पचरा है पारे कहा को एजुकेशनल बैकग्राउंड रो क्वेश्चन न पचरा है पारे सो एवरेज टाइम में माने चलियो 20-25 मिनिट्स तार भीतर अब टाइम जणा पड़ेनी किछि व्यस्त होबार नहीं जणा पड़ियोनी कि अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा पर्यंत मोर इंटरव्यू हो मिनिमम 20-25 मिनिट्स तो ये बढ़ी पारे कमी भी पारे ताले हमें देखिबा बर्तन हम बेसिक जिंस हम केते जिंस क्लियर हो गेले इंटरव्यू रे कोन हुए कोन नहीं इंटरव्यू कोन से माने कोन जज करन एबे आस छोट छोट जिंस रो आरंभ करछि पूरा एंड पर्यंत जीवी असले ड्रेस कोड कोन पिंदी के जीवा दरकार फॉर मेंस समस्त जानि छ फॉर्मल ड्रेस कोड पिंदी के जीवो टाई कैन पुट अप टाई पिंदी परियो प्लस तापर ब्लेजर चाहिले पिंदी परियो बोथ फॉर मेन एंड वुमेन ब्लेजर पिंदी परियो साड़ी ऊपर मध्ये ब्लेजर पिंदी परियो कोनोसी असुविधा नाही नाउ नेक्स्ट इज अबाउट टाई भिडीबाटा जदि निजे सिखि जाइतो बेटर इन बेले बेले से माने जदि अनकंफर्टेबल हो टाई भिडीबारे बा जदि बॉटम दबारे असुविधा होची तुमको यार ब्लेजर रो तले एमती अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जीवन नेक्स्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स सालवार पिंदी के भी जाई परियो फॉर्मल सालवार पिंदी जाई परियो साड़ी पिंदी जाई परियो बट आई विल एडवाइस फॉर साड़ी समस्त साड़ी पिंदी के जाओ जदि बेसी पतला अछ बा लागुची पर्सनालिटी बढ़िया पई आउट के तापर ब्लेजर पिंदी परियो कोनची असुविधा नाही ब्लेजर पिंधिले किछि प्रॉब्लम नहीं बट ता बॉटम को ध्यान दबो बसिला बेले केमती खोला रहइबो केतेटा बंद रहइबो केतेटा ताको ध्यान दबो अनकंफर्टेबल वे रे बसिबनी नेक्स्ट रहला जोता जोता कोन पिंधि जो फॉर्मल शूज समस्त पिंधि परियो ब्लैक बा ब्राउन शूज मींस आउ फीमेल से माने नॉर्मल शूज पिंधि के जीवे हील पिंधि के टॉप हील्स पिंधि के जीवनी बा जो जोता पिंधि के तो सेटा नुवा न होइतवा दरकार चालिला बेले सेटा साउंड न करिया दरकार एंट्री और एग्जिट समय सेटा ठक ठक जो साउंड हो जोता पिंधि सेटा न करिया दरकार नॉर्मल साउंड होवा दरकार ये वाला ड्रेसिंग आउटफिट ऊपर परफ्यूम परफ्यूम व्यवहार करिवनी कि किछि कोडा परफ्यूम व्यवहार करिवनी यदि निहाती दरकार ताले स्लाइटली परफ्यूम यूज करिवो जोटा पूरा नॉर्मल परफ्यूम किछि कोडा परफ्यूम जणा पडियो पकी के आस्तो सेमति यूज करिवनी नॉर्मल गेटअप रे जीवो कंप्लीटली यदि घंटा पिंधुचो ताले फॉर्मल घंटा पिंधितो बड़ बड़ डायल वाला घंटा पिंधिवनी पूरा नॉर्मल फॉर्मल घंटा जोटा सेटा पिंधि परियो ये वाला ड्रेस कोड ना नुआ न पिनी पुराना पिंधिले भलो पुराना माने पूरा पुराना नुई किछ दिन यूज हेतिबो यूज ड्रेस पिंधिले बेटर नुआ पिंधिले तार गोटे आउटलुक अलगा प्रकार आसीबो ताको मैनेज करबा टिके कष्ट होई नु पुराना पिंधिबो टिके पुराना जोटा हेतो सेटा बेटर यूज करियो नेक्स्ट हला हमें एंट्री केमती करबा एग्जिट केमती करबा एटा मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर एंट्री और एग्जिट सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स डिसाइडेड फ्रॉम योर एंट्री एंड एग्जिट द वे यू walk the way you take the permission of the board to enter first time तो एंट्री करूचे से कबाट बंद थिबो तुमको डका जीवो रोल नंबर डका जीवो बोर्ड रोल नंबर डका जीवो जेतो एंट्री करतो फर्स्ट नॉक करिवो दी थर तीन थर एमते कबाट को नॉक करिवो ठक ठक करिवो तीन थर धीरे धीरे करिवो तापर कबाट को खोलिवो पूरा खोलिवो ने 20-30% पर्यंत खोलिवो जेमते अधा देखा जीवो ताले बोर्ड रो परमिशन नबो एक्सक्यूज मी सर मे आई प्लीज कम इन कहबो एतिकी कहला बेले पोलाइटली कहबाटा केमती जणा पड़े फ्रॉम योर पोस्चर एंड गेस्चर केते डिग्री इंक्लाइन करी के आगो कहउछ एमती स्ट्रेट छिडा के आरोगेंस देखि कहबोनी मे प्लीज कम इन सो टिके पोस्चर गेस्चर टिके ठीक रखिबो हाथ रे पचारथिबो कि मु टिके जाई परिबि कि जेमसी टाइप रो थिबा दरकार हाथटा टिके नई थिबो आगो टिके स्लाइट इंक्लिनेशन थिबा दरकार हसी की कहबो मे प्लीज कम इन से मुह को चाइला बेलको मोडा दिन हस हस दिसतो डर लागु नथिबो सीरियस लागु नथिबो कि झाड़ा बाहर नथिबो ए सब जिंस को मार्क करियो भला सो इंटरव्यू ये एंजाइटी को कंट्रोल करथिबो बहुत समय पूर्व जाइथिबो एंजाइटी कंट्रोल इनसाइड द ओपीएससी अपार्टमेंट इटसेल्फ हे जिवो तो ता पूर्व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हबो सेठी टाइम जाइथिबो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूर्व कैंडिडेट थिबो ताकर इंटरव्यू जाइथिबो सेठी बसिथिबो ऑलरेडी किछ समय पानी पी की कूल हे की बसिथिबो जनरली तो एंजाइटी बढ़ी जाए गोटे सिंपल ट्रिक अछि एंजाइटी को कमया पई मुंह धोई परिबो बा पानी नै की बेक कान पछरे मारी परिबो कान मुंडे बेकर जदि पानी मार दो हाथ ओदा करके एंजाइटी कमी जाए बोली कहते जनरली भी कमी जाए सो टू सम एक्सटेंट एटा कमी जीवो तुम कूल हे परिबो
सो एंजाइटी शो करबनी मुहरे स्माइल करके जो हसियो माने जोर हसियोनी सेटा जस्ट स्माइल अल्प हसियो स्मित हास्य जा कोन तापर बोर्ड अलाउ कर दो कि यस कमिंग तो बोर्ड जोर कहि पार रागी कहि पार यस कमिंग बा पोलाइटली कहि पार यस प्लीज कमिंग डिपेंड्स केमतिया बोर्ड अछि सो यू शुड बी प्रिपेयर कि जद रागी को यस कमिंग तो सेही हिसाब रे जीवो माने डरिबोनी सो बोर्ड को जीवा पर हठात जाई कि कोन करन पिला आइदर चेयर रे बसी पड़िए न तो छेडी परमिशन आ गोटे जन जन कर बेसी बुद्धि थाए से परमिशन मागिबे मे प्लीज सिट इन द चेयर सर किछि कहबोनी चुपचाप छेड़ा हो भीतर को जीवा पर नमस्कार करिवो हाथ रे गुड मॉर्निंग बा गुड आफ्टरनून जा आइतो से कहबो प्रथमे जदि फीमेल मेंबर थे तांको फास्ट विश करिवो तांको चाहि आई कांटेक्ट इज अगेन इंपोर्टेंट जेतबेले नमस्कार करूचो बा गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जहां भी कहूच आई कांटेक्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर जे सेटा मिस करिवो तुम भाबी कि चला कि इंटरव्यूटा से अनुसार मिस हो जाउछ कहीं ना आई तुम देखो अननोन लोक सहित आम गोटे रिलेशन एस्टाब्लिश करूचे जी जहार तुम प्रति से गोटे सॉफ्ट कॉर्नर पळे आसीबो इंटरव्यू बोर्ड रे से लोक सेही टाइप रो मन कर गोटे लोक हैरान करूची कष्ट क्वेश्चन पचार चलची बा तुम आंसर दे परनो गोटे मेंबर रो क्वेश्चन आउ गोटे मेंबर तक ओवरकम करके पचारिबो बा से सहज क्वेश्चन पचारिबो तुम हिसाब रे क्वेश्चन सिंपल कर दबो क्वेश्चन टाको बा किछि न पारले से पचारिबो टेल मी समथिंग अबाउट योर पेरेंट्स अबाउट योर जॉब एक्सपीरियंस सो टू मेक यू कूल टू मेक यू मोर एडजस्टेबल टू द एनवायरनमेंट सो को लोकटा तुमको सिंपैथी देखियो जो लोक सहित तुम रिलेशन थिबो का सहित रिलेशन अछि पूर्व ना जहा सहित आई कांटेक्ट बेटर है सो आई कांटेक्ट इज अ मीडियम टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विथ अननोन पीपल तेणु आई कांटेक्ट स्ट्रांग आउ थरो होबा दरकार क्लियर होबा दरकार जो माने स्पेक्स पिनछन चश्मा पिनछन से माने सेही हिसाब रे एडजस्ट करते चश्माटा को जणा पड़थिबो क्लियर कट आई कांटेक्ट होउची बोली सो जीव तापर नेक्स्ट होउची नमस्कार कल नमस्कार हाथ रे नमस्कार करिवो पोस्चर रहइबो नमस्कार कहिबोनी नमस्कार कहबो गुड मॉर्निंग मैम देन जदि थिबे गुड मॉर्निंग सर फर्स्ट फीमेल मेंबर जे थिबे वुमेन मेंबर जे थिबे तांकू ग्रीटिंग्स दबो तापरे मेल मेंबर मानको पाखो आसीबो समस्त को मुंह को चाहिबो तापर से कहबो बस बसला पर बसिबो कंफर्टेबली बसिबो ब्लेजर पिनथिबो जे दीटा बटन दिया हेतो फर्स्ट बटन खोलिया पड़ियो जदि बसले सेटा अनकंफर्टेबल हबो बसिया पूर्व हाथ रे तो खोल देथिबो धीरे करी खोल देथिबो टणा भिडा करी न खोल देकी बसिबो बसिला परे पुनी आई कांटेक्ट सेंड स्माइल थिबो मुहरे स्माइल टिके टिके पूरा करूथिबो आसीबा पर्यंत स्माइल चलिथिबो कोडी भी स्माइल बंद करिवोनी क्वेश्चन न आसले भी स्माइल करथिबो स्माइल टा इंपोर्टेंट फैक्टर गो विथ स्माइल एंड कम आउट विथ स्माइल स्माइल और आई कांटेक्ट इटा बहुत इंपोर्टेंट तापर बसिबो बसिला परे केमती बसिबो ना चेयर ऊपर तो बसुचो चेयर दीटा हैंडल थिबो दीटा ऊपर दीटा तक हाथ रखिबो गोड़ दीटा सीधा थिबो सेमती स्ट्रेट नख तळे बसिबोनी गोड़ हलचल करिवोनी सीधा बसथिबो सेमती तापर से माने क्वेश्चन पचारि आ पूरा आगो को बसिबोनी अनकंफर्टेबल हे कि चेयर रे डरी कि पूरा आगो को चेयर बसिबोनी चेयर रे पूरा कंफर्टेबल जेमती बसंती जोटी आउ जंती चेयर रो रेस्टिंग पोजीशन दा अछि सेठी न आउजी कि ताटु टिके छाडी कि रहइबो आगो स्ट्रेट बसिबो सीधा बसिबो किंतु आउ जीवोनी चेयर किंतु पाखरे बसथिबो आ पूरा आगो को बसिबोनी स्ट्रेट बोली डरी पूरा कंफर्टेबली बसिबो जेमती अफसर बसंती गोटे विथ गुड एटीट्यूड तापरे से माने क्वेश्चन धीरे धीरे पचारिबे सो इट इंपोर्टेंट एंट्री और एग्जिट रे एग्जिट जेतबेले कोर्स मध्य सेमती कहि के आसीबो कि थैंक यू वेरी मच टू ऑल द मेंबर्स and it was one of the nice interview but the first interview this is my first interview and this is the most important interview of my life so I learned a lot from this honorable board so wish you all the best wish you good day कहि के से तुमको all the best कहबे तो थैंक यू कहबो एति कथा एला एंट्री और एग्जिट रे एई टाइप रो पोस्टर रहबा दरकार एबा एई टाइप रो एटीट्यूड रहबा दरकार या पर जदी किछि कार क्वेश्चन अछि पचार बुझियला एति दिन सब बुझिलो ना डाउट नेक्स्ट आसीबा हमें क्वेश्चन को नेक्स्ट आसीबा क्वेश्चन को कोन आसीबो डायरेक्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन 90% टाइम रे हमको आसीबो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट क्वेश्चन 90% टाइम रे हमको आसीबो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ रे कोन कहबो तो पुनी ना रो आरंभ करिवो माय नेम इज दिस माय नेम इज दैट एठु आरंभ न करी कि तुमे कहबो ना तो ऑलरेडी जणा अछि पूरा ना न कहि पारो शॉर्ट नेम कहि पारो खाली बा न कहले भी ना बेटर ना को ओमिट कर दबो डायरेक्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बा करेंटली कोन करतो से आरंभ करियो हैला फ्रॉम क्वालिफिकेशन स्टार्ट करि पारो आई एम एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट completed my BTech in this year but and currently I'm working as a software engineer working as a junior assistant working as a senior clerk working as a teacher educator ja mu ya करूची and before that वर्तमान आरंभ कलो वर्तमान जो पोजीशन थिलो सेटा को आरंभ कलो फर्स्ट कहलो कि मु या आई एम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन एमएससी केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी
currently I am working as a research associate, research assistant, but currently I am preparing for civil service examination. Before that I completed my post graduation from this college, graduation from this college, 12th from this college, intermediate from this college, then schooling from this school. ये गला तुम ऊपर तुम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहला तापर जब जॉब एक्सपीरियंस थिबो किछि प्रेजेंट रो पास्ट पर्यंत कहि जिवो. देन फैमिली एक्सपीरियंस कि माय फैमिली कंसिस्ट ऑफ माय पेरेंट्स, my father and mother, then my siblings. एठी गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर जो हम फैमिली ऊपर कहूचे हमें गोटे गोटे लाइन इंट्रोडक्शन दवा समस्त ऊपर. My family consists of कौन लिखला एटा I had we need to hide name. Is this correct? Yes, almost correct. While introducing yourself ना टा को omit कर देले बेटर, ना न कहले भलो. काइना बिकॉज़ ऑलरेडी बायोडाटा अछि ना समान को पाकर अछि तो ना रो आरंभ करा जाय. सेत में कहली फास्ट सबल फ्रॉम क्वालिफिकेशन इट लिखि छि मु देखियो स्लाइड. तो इंट्रोडक्शन दोचे क्वालिफिकेशन नु स्टार्ट करियो सबल बेटर. बा जॉब एक्सपीरियंस बर्तमान जा करछो सेतु करियो सेटा बेटर. सो करंट रू स्टार्ट करी करी पास्ट को जीवो. So family experience जेतबेले कहउछ सेठी कहउछ कि लेट्स से डिस्कसिंग अबाउट योर फादर कहउछ कि माय फादर इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट बा माय फादर इज अ टीचर, माय फादर इज अ लॉयर, जहा कहउछ सेटा कहइबो. सेटा कहिला परे कहइबो कि आई हैव लर्न दिस फ्रॉम माय फादर. जरा मन कर कहले कि आई हैव लर्न प्रिजर्वेरेंस फ्रॉम माय फादर, आई हैव लर्न हाउ टू डू हार्ड वर्क फ्रॉम माय फादर. सो गोटे एट्रिब्यूट बा गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स जोटा लागु जे ठीक कि मो फादर गोटो सिखि सेटा हम एक्सप्लेन करियो. सेमती मदर, माय मदर इज अ हाउसवाइफ. सो मदर टू कौन सिखि तो ना लेट्स से आई हैव लर्नड हाउ टू सर्व विथ अ स्माइल फ्रॉम माय मदर. Then my siblings, I have 3 siblings of I have learned how to be cooperative in life from them, how to do adjustment in life with them. एतरे गोटे गोटे क्रॉस क्वेश्चन आसी पारे कि व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टमेंट इन लाइफ. एडजस्टमेंट मींस फुलफिलमेंट, सेल्फ कंटेनमेंट, व्हाट डू यू हैव. जहाँ क्रॉस क्वेश्चन आछो ताको टिके एक्सप्लेन करतो, जो जहाँ जहाँ वर्ड थो ताको एक्सप्लेन करियो. एटी बेसिकली कोन होय इंटरव्यू रे से माने जानि न थाने हमो कोन पचारिए बा दे डोंट कम प्रिपेयर्ड कि ये कोई क्वेश्चन पचारियो. रादर you have to hint themselves कि एई रिलेटेड क्वेश्चन मते पचारंत. तो धर मु कहि दिला जने कहि दिला कि my father is a government servant working as a police personnel, DSP अछन, DSP अछन, कि my father is a doctor, कि मु मेडिकल पढी छी बा मोर इंटरेस्ट है, मोर हॉबी है. ता माने हमें हिंट देले ताको एई क्वेश्चन पचारि पचारि चलांतु. बा क्वेश्चन पचरा हला कि हम टेक्नोलॉजी पढी के आसी छ केमते टेक्नोलॉजी को यूज करि पारिबो. जदि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढी छ, पॉलिटिकल साइंस पढी छ, ताले एई क्वेश्चन नो यू कैन carry forward your discussion towards e-governance, use of information communication technology in governance. Hint देले ସେମାନେ से hint भितर कीवर्ड बाछि की पचारନ୍ତି most of the times. तो से कीवर्ड जोटा हम जानि थियो जदि से कीवर्ड को यूज करछो ताले एटा सबल तमे बेटर. जदि एई जिंस न करि परती याको ही कोंती कैरी फॉरवर्ड करबा इंटरव्यू रे. एई जिंसटा न करे तमे काहे कि ना आइदर आमे हिंट देबा तांको पचारिया को अदरवाइज से जा जानि चंसी पचारियो. जदि वंस 3-4 जण एक्सपीरियंस लोक जे एंटायरली तांको लाइफ टाको बंची सारलेनी, जो मानको पाकर एम्पल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस अछि, नॉलेज अछि, से माने पचारियो को लागि एटा ताम पे डिफिकल्ट हे जेबो ना आंसर दवा पे. सेति पे बेटर सबले टिके टिके हिंट दियो ताम. हिंट देले से माने तारि ऊपर क्वेश्चन पचारे, से रिलेटेड क्वेश्चन माने पचारे चले. मन रखता सबले टिके किछि भूल के ठीक नहीं. दिस इज ऑल अबाउट योर अप्रोच टुवर्ड्स द बोर्ड, द वॉइस इन व्हिच यू स्पीक. को वे रे हमें कथा कहू सेम जिंस जनको मोरे भल लागि पारे, जनको मोरे खराब लागि पारे. So basically you have to show pleasing attitude to the board. ठीक को भूल को सेम मार्क मिलियो तुमको. ठीक कहले जति कि मिलियो होय तो ठीक कहले कम मिलि पारे, भूल कहले बेसी मिलि पारे. बट द वे यू रिप्रेजेंट, द वे यू से कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट दिस और आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस. प्राय जगह यूज करियो कि आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस, आफ्टर द इंटरव्यू आई विल गो थ्रू दिस कांसेप्ट्स. ए टाइप रो वर्ड यूज करियो. सेटा पोलाइट वॉइस रे कहबो, किछि फरक पड़िबोनी. मन रखो 10 टा रु भी 6 टा क्वेश्चन न कहू तबे भी फरक पड़िबोनी. This is all about how do you speak. Again, it is your personality. How do you perceive? Question da asuni. So question empty question definitely किछि ना किछि रहबो. As a bureaucrat, there will be some situations where it will be difficult to handle. But empty किछि unexpected situation, circumstance definitely हम life रे आसीबो as a bureaucrat. तो हमको ताको हैंडल करिवार अछि. In the same way, unexpected question asked, you have to handle that also. तो सेटा को हम हैंडल करछ एमती किछि डरी कि सेठी कहबानी, लाजी कि कहबानी, नर्वस है कि कहबानी, बोल्ड है कि कहबा. जो वॉइस रे हम पूर्व कथा होतले बोर्ड सहित से वॉइस रे हम कथा हो, से वॉइस रे कंटिन्यू करियो. देन पेरेंट्स सिबलिंग्स गला. तो पेरेंट्स सिबलिंग ऊपर कहू गोटे लाइन इंट्रोडक्शन रे दबा सहित कहबो कि
ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଶିଖିଛି ଆଙ୍କଠୁ। ନାउ କମିଂ टू हॉबी, तो हॉबी रे हॉबीटा गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक। बहुत समय हॉबी रो क्वेश्चन आसे, इवन इफ 50% इंटरव्यू मु देखिछि कि हॉबी ऊपर ही डिस्कशन हो जाए। तो हॉबीटा लेखियो तुमको तो डा फॉर्म दिया जो सेठी फिल अप करिवार अछि कि मो हॉबी है। तुम तर हॉबी सब कोन लेखियो भाबिछ? दि चारटा हॉबी मते कहला जे जा भाबिछ। क्रिकेट खेलिबा कि फिल्म देखिबा कि बही पढिबा कि गूगल करिबा, जे जा भाबिछ दि चारटा हॉबी कहि परियो। भाबिछ कि मो ई हॉबीटा मोर पुट अप करियो। अच्छा, नो हॉबी भी लिखियो, नो हॉबी भी लिखियो, कि को मान लिखियो, को सेटा लिख परिबे। पेंटिंग, स्केचिंग, बुक रीडिंग, अच्छा, कुकिंग, पेंटिंग, राइटिंग ओडिया पोएम ही परियो, ये सब ही परियो। राइटिंग स्टोरीज ही परियो। स्टोरीज देखो सब बळे आंसर टू दी पॉइंट हो। स्टोरी माने शॉर्ट स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी, ओडिया रे स्टोरी हैला, सब गुडा को लिखियो, क्लियरली कहियो रीडिंग स्टोरीज एंड नोवेल्स। ठीक अछि, ओडिया इंग्लिश कोन सेटा कहियो, ओडिया रे कहिबी स्टोरी, इंग्लिश रे पढे मो स्टोरी, को टाइप रो स्टोरी पढे सेटा कहियो। एथु सब माने क्रॉस क्वेश्चन करिवे। कोन क्रॉस आसीबो क्वेश्चन? मन कर कहलो कुकिंग, तो से क्वेश्चन पचारिबे कुकिंग रे। फर्स्ट क्वेश्चन लेट्स से पचारि देले, हाउ इज कुकिंग हेल्पफुल एज अ ब्यूरोक्रेट? Once you clear this exam, you will be appointed as the Tahsildar or sub collector or DSP of a district or Tahsil or block jabi. So cooking is your hobby, and how come cooking will help you as a bureaucrat? How come writing stories will help you? और नोवेल पढ़ो तो नोवेल पढ़ले केमती इटा काम दबो तुमको इंटरव्यू सॉरी एज अ ब्यूरोक्रेट कौन करियो से नोवेल पढ़ा को नहीं केमती यूज करियो नोवेल पढ़ा ए क्वेश्चन आसीबो एटा ला फर्स्ट क्वेश्चन बाय इंट्रोड्यूस योरसेल्फ रे तुम सेमती क्वेश्चन आसी पारे व्हाई दिस सर्विस ओएस ऑफिसर काहे के होबा को चाहू तो एगुडा को बेसिक क्वेश्चन ये क्वेश्चन सब प्रिपेयर हो लेखि कि म देखेबो कोन कोन आंसर लेखु छ सब म कहि दउ हिंट दे दउ कोन कोन कहबो लेट्स से मैं देइछ कुकिंग कुकिंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर wherever maybe a person is, maybe in civil service, maybe a doctor, engineer, professional, everyone needs cooking. And sir, cooking is all about management. So this is management of different ingredients that we need to prepare a dish. In the same way, we learn management skills from cooking. How to add, when to add, what to add, how to make different recipes. So if there is a mismanagement, then the entire recipe is going to be wasted. So management is important attribute or characteristics of human being. As a bureaucrat, I think there are more importance of self-management as well as managing the entire tahsil or the block or the district. So most important factors are that I learn from cooking is management that I can impose, that I can use as a bureaucrat in my tahsil or in my district. एटा सेमती किछि गोटे बड़ा उत्तर नुहे बा गोटे किछि जनकु पूरा प्लीज कला भलिया उत्तर नुहे बट दिस इज ऑल अबाउट द प्लीजिंग एटीट्यूड और द प्लीजिंग वॉइस दैट यू यूज your voice should always be convincing मु कन्विंस करिया पई चाहू छथि इट शुड नेवर बी कॉन्ट्राडिक्टरी डिस्प्यूटेड वॉइस नुहे एरोगेंट वॉइस नुहे बा मु अधिक जानि से वॉइस नुहे मु बुझेयार वॉइस जनकु बुझौ छ because writing story केमती हेल्प करूची ना अगेन यू कैन पुट मैनेजमेंट राइटिंग स्टोरी जो मैनेजमेंट आउची इट मेक्स मी हैप्पी मु बही पढिला परे सो या थ्रू आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइफ आई कैन गो थ्रू से पचारिबे कार कार बही पढिछ मु अमुक अमुक बही पढिछि पचारि पारंती पचारिबे तुमक जे कहयो स्टोरी फोरी लिखुची पोएम पढुची पचारिबे कि किए विषाद ऊपर को कवि अधिक लेखन्ति ओडिसा रे मायाधर मानसिंगर तीन चारटा लेखा को प्रतिभा रायकर तीन चारटा लेखा को कोन बही पढिछ को विभूति पटनायकर कोन बही पढिछ को जे जहा कहयो सेमती पोएम पहले पोएम पचरा जाई पारे तुम को बुक रीडिंग स्टोरी रीडिंग नोवेल रीडिंग का नोवेल ऊपर क्वेश्चन आसी पारे पेंटिंग स्केचिंग से पेंटिंग स्केचिंग रे जो माने ऑप्शन सब बड़ बड़ लोक तांको ऊपर क्वेश्चन आसी पारे पट्टचित्र अछि जोडा सब कल्चर रे पढिछ पट्टचित्र कोन तो एई प्रकार जो हमर पेंटिंग अछि ए पेंटिंग को कोन कोन से पेंटिंग को कोन कोन या ऊपर क्वेश्चन आसी पारे सो सब आडू क्वेश्चन आसीबो सेही हिसाब रे भाबी चिंती कि लिखिबो और जहां लिखिथिबो तापर नॉलेज नै कि जीवो खाली खाली जीवो न हयराण हो हैला सो निजर हॉबी आज गोटे फाइनल करिवो मैक्सिमम गोटे बा दीटा अच्छा नो हॉबी भी हमें लिखि परिया पदरे काहे कि हॉबी नै कि तुम तो साधारण मनुष्य काहे कि हॉबी नै के लिखि परिवो एटा जी ऑलरेडी फुल टाइम काम रे अछि
फुल टाइम काम किए अच्छी गोटे वर्किंग प्रोफेशनल अच्छी लेट से वर्किंग प्रोफेशनल एपटे तार घरे पिला छुआ अच्छा इनलॉज संभालुची से चाकरी करूची प्रिपरेशन करूची 24 आउट ऑफ 24 आवर आई डोंट get sufficient time to continue my further preparation, so I have a very little time to use it. So I am a very normal human being. In my school days I had some hobbies. I was pursuing some hobbies, but right now time doesn't permit me because of paucity of time. I'm not able to pursue my hobby as of now, sir. So ताकू एटा कहि से माने कहि परिबे जो माने ऑलरेडी पैक अछन ताको लाइफ रे, जो माने पैक नांती से माने गोटे दिटा हॉबी देबे निजर दिटा हॉबी आ से हॉबी काहे कि इंपोर्टेंट कोन इंपोर्टेंट ताको लिखियो जहाँ जहाँ आम डिस्कस करछे ये स्लाइड रू देखियो को पॉइंट डिस्कशन हैला से पॉइंट ऊपर गोटे गोटे पैराग्राफ गोटे गोटे पेज समस्त लिखियो और विदाउट प्रिपरेशन सेमती गले हैरान हे के आसियो भला। तो हॉबी रे क्वेश्चन आसीबो व्हाई दिस हॉबी एंड व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ योर हॉबी ऑन सिविल सर्विस। आईएस हला परे ओएस हला परे सेटा कोन काम लागियो सेटा डिस्कशन करियो। देन नेक्स्ट ला सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ने बेसिकली कोन पतरा जाय मन कर पतरा जीवो तुमको कि गोटे हीराकुद डैम भली आ गोटे डैम होची तुम से जगह रे तहसीलदार अच्छो बीडीओ अच्छो तुमर व्यू कोन छै कोन करियो फास्ट बा गोटे कम्युनल राइट्स ऑल ऑफ सडन हे गला कोन करियो रथ यात्रा होची कोन करियो कोविड पैंडेमिक टाइम पीरियड सेठी केमती मैनेज करियो एमती क्वेश्चन आसियो। तो ये क्वेश्चन को सब बेले रिलेट करिवो विथ एनवायरनमेंट विथ इकोलॉजी विथ गवर्नेंस बा गुड गवर्नेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या सहित सब बेले रिलेट करिवो मन रखता मन कर पत्रा हला तुमको सिंपल क्वेश्चन गोटे दोची कि रथ यात्रा रे कोन केमती मैनेज करियो तुम फास्ट देखियो कि मु सिक्योरिटी मैनेज करियो माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज सिक्योरिटी बिकॉज़ लॉट ऑफ क्राउड सो क्राउड मैनेजमेंट इज इंपोर्टेंट देयर मे बी एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी वायलेशन by any terrorist outfits currently there are so many terrorist attacks देखो ए क्वेश्चन मु हिंट दे देली टेररिस्ट अटैक अधिक होउछ त नेक्स्ट क्वेश्चन मते आसीबो उरी अटैक पुलवामा अटैक कोन सिक्योरिटी क्वेश्चन ए सब आसीबो जेतोले हिंट दोउचे गोटे टॉपिक ऊपर माने बी रेडी टू एक्सेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चंस कॉन्सिक्वेंट क्वेश्चंस ऑन दैट हम कहला फर्स्ट कहला कि रथ यात्रा जणे कि सर फर्स्ट आई विल फोकस ऑन सैनिटेशन हेल्थ एंड सैनिटरी पार्ट बिकॉज़ ऑफ द क्राउड मे बी देह खराब हे पारे बहुत जण करबा बहुत जण विभिन्न प्रकार इन्फेक्टेड डिजीज रे अफेक्टेड हे पारे ताने नेक्स्ट क्वेश्चन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर तुमको आस पाए नेक्स्ट क्वेश्चन हेल्थ ऊपर किछि स्कीम ऊपर आस पाए ऑल ऑफ सडन से पतर दे व्हाट इज आयुष्मान भारत ममता स्कीम कोन कहलो गवर्नमेंट कोन कोन स्कीम आनी छि सब हेल्थ सैनिटेशन पाई वुमेन मानक पाई कोन स्कीम अछि छोट छुआ मानक पाई कोन स्कीम अछि आईसीडीएस स्कीम कोन कहलो एमदी पचार दे पारन हटा तेनु जहां आंसर दोउचो सेही रिलेटेड सब हिंट दो निज आड़ को टाणी के आंसर दो सब सो दैट से माने सेही टॉपिक रो नेक्स्ट क्वेश्चन उडा को पचार चली ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मन रखो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपोर्टेंट टू जज योर पर्सनालिटी एंड व्हेनेवर आंसरिंग सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस बी वेरी क्लियर कि मु एया करिया को चाहू छी आ काहे के करिया को चाहू विथ एन एक्सप्लेनेशन मु गोटे बंधटे तयारी हेबो सेटे मु फास्ट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करी एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रे कोन करबी ना देखिबी कि इकोलॉजी ऊपर केते इंपैक्ट पड़ जदी फॉरेस्ट गुडा को नष्ट हो जाउची इकोलॉजी एनवायरमेंट नष्ट होउची ताले मु एटा लेखि के देबी फॉर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट टू माय हायर अथॉरिटीज सब मन कले कहूथि मु हायर अथॉरिटी सहित कंसल्ट करिवि तुम सबऑर्डिनेट सहित कंसल्ट करिवि एवलिया बिहेवियर करतो खाली कहबे मु कर देबी सब आफ्टर कंसल्टिंग विथ माय हायर अथॉरिटीज आफ्टर डिस्कसिंग विथ माय सबऑर्डिनेट्स एवलिया लेखियो कहयो तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करिवि तापर देखिवि केते जण रिहैबिलिटेशन होउची ना नाही जदी रिहैबिलिटेशन होउची तले एनी टाइप ऑफ ह्यूमन राइट्स इज वायलेटेड बिकॉज़ ऑफ रिहैबिलिटेशन बा जदी सेमाने अथन फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी अछि मु देखिवि कि एनी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलिंग एक्ट इज वायलेटेड और नॉट ना बा मु देखिवि जेटी कोन प्रकार कम्युनल वायलेंस क्रिएट होउची ना नाही बा तांकर ह्यूमन राइट्स वायलेशन होउची ना नाही रिहैबिलिटेशन प्रोसेस ठीक होवर होउची ना नाही सेमान को आगु जगह रिहैबिलिटेट करिया मु देमो काम सो रिहैबिलिटेशन शुड ऑलवेज बी इन कनेक्शन टू द लाइवलीहुड जदि सेमाने सेटु पानी आनी कि सेटु माछ धरि कि जीवन निर्वाह करछन जे सेमाने फिशरमैन कम्युनिटी तले तंग आगु जगह को नै गले मु नेला पर तंग कम्युनिटी तो दे विल लूज देयर लाइवलीहुड सो तंग लाइवलीहुड टाइम मत तंग दवा दरकार ना तंग लाइवलीहुड तंग सप्लीमेंट करिया दरकार ता ऊपर डिस्कस करियो कि लाइवलीहुड केमति देबी मनरेगा रे देबी कि तंग आउ कोटी चाकरी देबी कि आउ किछ काम देबी ता ऊपर डिस्कस करियो ता माने देखो ए गोटिए क्वेश्चन जदि डिस्कशन आरंभ होई घंटाटे पर्यंत डिस्कशन हे पारियो बिकॉज़ यू विल टॉक अबाउट रिहैबिलिटेशन स्कीम्स you will talk about human rights violation you will talk about livelihood ये तीनटा एते बड़ बड़ इंपोर्टेंट वास्ट एरिया या ऊपर डिस्कशन हेले सरीबन सो एई क्वेश्चन आंसर देला बेले you are giving a very huge hint to the board that एई टॉपिक ऊपर हमर डिस्कशन चालू सो रिहैबिलिटेशन स्कीम ऊपर डिस्कशन चली पारे सेठी स्कीम ह्यूमन राइट्स वायलेशन ऊपर डिस्कशन चली पारे बा कुछ डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी जो मन को डिस्प्लेसमेंट ता पर डिस्कशन चली पारे
बुझिला ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ये क्वेश्चन आंसर देला बेले क्लियरली आंसर दबो कंप्लीट और कंक्रीट आंसर दबो तुमर व्यू कोन तुमर स्टैंड कोन जेतोले स्टैंड ऊपर डिस्कशन करछो सब मन रखा कहबो विथ रेस्पेक्ट टू रूल ऑफ लॉ in accordance to the constitution of India with respect to not violating the constitution বা not violating the human rights ये सब टर्मिनोलॉजी गुडा को यूज करथो सब कि एई अनुसार मु करबी काम नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे आसी पारे हमको व्हाई ओएस ऑफिसर व्हाई सिविल सर्विस कोन आंसर दो यार समझ देबे कि मु पावर एंजॉय करियो पासी रिमेंबर नेवर यूज दिस टर्म पावर पावर इज अ नेगेटिव टर्म मु पढेला बेले बारंबार कहि the term exact term is authority so abuse of authority is power abuse of authority is power negative term रे power यूज करा जाय आउ किछि कोन मु आसी सोशल सर्विस करिया पई नेक्स्ट क्रॉस क्वेश्चन आसीबो कि सोशल सर्विस करिवार अछि देन व्हाई डोंट यू गो फॉर एन एनजीओ एनजीओ जाओ एनजीओ रे काम करो कोन सुविधा छै एनजीओ रे काम करो एनजीओ रे काम करि पारियो बहुत सोशल सर्विस करियो सेठी एटी सिविल सर्विस सर्वेंट डिग्री कोन करियो सोशल सर्विस सो ये क्रॉस क्वेश्चन गुडा को आखि आगे रखी हमको उत्तर देवा पड़ो बी प्रैक्टिकल इन योर आंसर कहबो सर आई नीड अ बीइंग ऑनेस्ट आई नीड अ परमानेंट जॉब व्हिच शुड बी सिक्योर विथ अ हैंडसम सैलरी दैट कैन सस्टेन माय लाइफ एंड माय डिपेंडेंट्स आई नीड अ जॉब which should give me a social status social respect security जदि प्राइवेट चाकरी कर सको ऑलरेडी आई मीन पचारियो क्वेश्चन कि प्राइवेट रे तो काहे के आसीबो चाहू कहबो कि आई एम ऑलरेडी इन प्राइवेट जॉब व्हिच इज नॉट सिक्योर बा कहि परियो कि आई एम इन अ प्राइवेट जॉब बट आई एम नॉट एन एमबीए दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर एमबीए दे आर गेटिंग मोर बेनिफिट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन सो मु एठी के आसीले अधिक पाइबी दरमा पाइबी सो सैलरी केते सेठी अछि तो से सैलरी अनुसार कंपेयर करिवे से कहबो सेठी सैलरी 50000 अछि कि 70000 अछि पचारे व्हाट इज द इनटेक सैलरी पर मंथ प्राय जगह पचारन तो कहबो मु एतिक टका पाउची मासु जे कहबो हेठी तो पाउथलो 2 लाख टका 1.5 लाख टका एठी एते कम टका सेठी फॉरेन बुलुथिलो आईटी इंडस्ट्री चाकरी करी कि बाहर रहउतलो मेट्रो सिटीज रे रहउतलो एठी ये चाकरी काहे कि ताले एठी कोन उत्तर दबो पुनी कहबो कि सर इन्फ्लेशन होची जो प्राइवेट सेक्टर रे मु रहया पई चाहुनी बिकॉज़ ऑफ कहबो पुनी वर्क प्रेशर अधिक प्राइवेट सेक्टर सिविल सर्विस रे भी अधिक I need a secure job, permanent job. I don't want to switch my job in every 2 years to enhance my salary. Then social status मते दरकार आउ मते ता सहित दरकार कि I should be given an opportunity with authority to do something for my fellow people, for the social welfare of the country, for welfare of the country, for development of the country. तो ये सब सहित कहयो मु डेवलपमेंट करिया पई चाहू with authority, yes, with stability. So in that job, in private sector job, I have time to think about myself only. I cannot think about the public. I cannot think about the my countrymen, those who are suffering from poverty or so different type of socio-economic or socio-legal issues. So once I am interested with this with authority, I can work for my people. So there are so many schemes that I can utilize, that I can implement for these people, for their upliftment, for their development. এই কথা কইবা তা সহিত কিন্তু মন রাখো এই বেসিক জিনিস নিশ্চিত কইবা মতে परमानेंट जॉब দরকার আই নিড अ हैंडसम सैलरी सिक्योरिटी से को सेट तो बहुत टका पड़तो एति कम टका नो दिस अमाउंट इज आल्सो गुड फॉर अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सो सेठी भी अधिक पाउतली दैट पॉइंट ऑफ टाइम द कॉस्ट ऑफ लिविंग वाज वेरी हाई आई वाज लिविंग इन अ मेट्रो सिटी लाइक बैंगलोर दिल्ली मुंबई so the cost of living is very high so here 60-70,000 is equivalent to 1 lakh 1.5 lakh there so even if reduction in salary there will be no reduction in the standard of living आंसर रेफर करिवे आसुची से कैडर को आसुची ऐसे क्वेश्चन को आसुची प्रेफरेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेफरेंस व्हाई ओएस व्हाई ओपीएस व्हाई ओएफएस इज ओ तो जने मन कर दे दीची लास्ट ऑप्शन दे दीची ओपीएस प्राय जण कोन करन किछि बुझि नथिबे लास्ट ऑप्शन दे दे ओपीएस किछि क्वेश्चन करिवे ओपीएस काहे लास्ट रे अछि फास्ट हेतिबो ओपीएस व्हाई ओपीएस पास तो ताको एनालाइज करिया पड़ियो इति जनरल प्रेफरेंस ले साधारणतः पचरा जाय नै जे जने प्रेफरेंस देछि ओएस ओपीएस ओएफएस ओआरएस ओटास एमती अछि ताल ताको पचरा जाय नै जे जनकर किछि एबनॉर्मल अछि प्रेफरेंस ता फास्ट देछि ओपीएस फास्ट देछि ओएफएस बा लास्ट देछि ओपीएस सेठी पचरा जाय कि व्हाई ओपीएस इज द फर्स्ट प्रेफरेंस व्हाई इज इट द लास्ट प्रेफरेंस सेठी कहयो मोर पुलिस प्रति आई हैव अ स्पेशल वीकनेस टुवर्ड्स खाकी
जे फास्ट देछि ओपीएससी को आई हैव अ स्पेशल वीकनेस टुवर्ड्स खाकी बा आई हैव अ स्पेशल वीकनेस टुवर्ड्स फाइनेंशियल मैटर्स आई एम कॉमर्स ग्रेजुएट बा मु एठी पढुतली बा मो काम मु लास्ट काम जा करतली दैट वाज ऑन फाइनेंस डिपार्टमेंट आई एम मोर इंटरेस्टेड फॉर फाइनेंस डिपार्टमेंट तेज कहीं फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रति इंटरेस्ट अच्छी कौन आर उत्तर दो So finance is the backbone. Finance is the backbone of the country. So financial strengthening is important. Financial administration is important. Financial management is important. So you have to establish. जहाँ जहाँ कोई बार अच्छी straightforward way न कोई in a convincing way you have to convince the board. यदि कथा politely करिया दरकार. प्रिफरेंस रिलेटेड आपको प्रिपेयर हो कहीं प्रिफरेंस कौन सेटा लिखियो गोटे पेज नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल पचारंदी बेले बेले डायरेक्टली इंट्रोडक्शन नदी कोंती इंट्रोड्यूस योर डिस्ट्रिक्ट और टेल मी समथिंग अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट मैं एमती स्पेसिफिक क्वेश्चन पचारंदी व्हाट आर द जियोग्राफिकल प्रॉब्लम इन योर डिस्ट्रिक्ट व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन योर डिस्ट्रिक्ट व्हाट आर द डेमोग्राफिक इश्यूज इन योर डिस्ट्रिक्ट हैला ये सब प्रिपेयर होगा पड़ो जियोग्राफी रे कोन प्रॉब्लम अछि जियोग्राफी रे बेसिकली रेफर टू एग्रीकल्चर और एवं जदी नेचुरल कैलामिटी किछि अछि सब बेले मन रखते आकु ही फोकस करिवो एग्रीकल्चर नेचुरल कैलामिटी इंडस्ट्री डेमोग्राफी डेमोग्राफी माने को टाइप रो मेल फीमेल पॉपुलेशन केते लिटरेसी रेट केते एससी एसटी कंट्री पॉपुलेशन केते परसेंटेज केते जदी एससी एसटी अछन कि पीबीटीजी ग्रुप अछन कि नाही बा जदी अछन से मान डेवलपमेंट होउची न होउची ये सब गुडा को ओबीसी अछन ना नाही फीमेल डेवलपमेंट अछि ना नाही चिल्ड्रन मान डेवलपमेंट पई कोन अछि ये वाला डेमोग्राफी रे आ गोटे सब मन को जियोग्राफी टा इंपोर्टेंट जियोग्राफी रो क्वेश्चन आसीबो सब रिलेट कर दो जियोग्राफी को आइदर विथ नेचुरल कैलामिटी और विथ एग्रीकल्चर यदि किसी रिलेवेंस अछि तुम डिस्ट्रिक्ट रो कि ये एग्रीकल्चरल क्रॉप टा अधिक होय ताको कोन करा दे परियो से को फार्मर केमती लाभ पाइबो तुम जिल्ला तो बा कोन कोन फार्मर प्रॉब्लम फेस करूची सब बेले मन को फोकस करिवो इमर्जिंग सेक्टर को कहबो एनर्जी इशू एनर्जी क्राइसिस बर्तन एनर्जी क्राइसिस चली छी कहबो एनर्जी क्राइसिस चली छी फार्मर को 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिली पानी सो दैट सी तार चाष करि पानी पानी जमी रे पानी मडी पानी या को फोकस करिवो आउ फोकस करिवो ऑर्गेनाइज सेक्टर रो लोन को फार्मर को मिल पारने बोली कहबो आ गोटे फोकस करियो फार्मर रो स्किल डेवलपमेंट हे पारने मो जगह स्किल डेवलपमेंट माने केमती टेक्नोलॉजी यूज करियो केमती इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मैकेनिकल टेक्नोलॉजी केमिकल टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी यूज करियो एग्रीकल्चर ऊपर फोकस करियो सब हैला केमती डेवलप कर परियो फार्मर वेलफेयर स्कीम ऊपर फोकस करियो इंश्योरेंस सेक्टर ऊपर फोकस करियो कोल्ड स्टोरेज नाही मो रीजन ने कोल्ड स्टोरेज हवा दरकार एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर सब बेले फोकस करियो डबलिंग फार्मर्स इनकम सो फार्मर इनकम को डबल करिया पहिले मु चाहूची सर एक्सपोर्ट बढ़ेबी एक्सपोर्ट बढ़ेले फॉरेन कंट्री को फार्मर रेट एक्सपोर्ट करो तो से अधिक टंगा इनकम कर परियो या पर डिस्कस करियो हैला देन हम इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन जदी आसिला ता इकोनॉमी रिलेटेड डिस्कशन करतो इंडस्ट्री ऊपर फोकस करिवो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर ऊपर फोकस करिवो प्राइमरी सेक्टर को केमती डेवलप करले कि तुमको जोटा लागु ठीक निज जिल्ला रे जदी सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होई परिवो मैन्युफैक्चरिंग चल कहबो बा जदी स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री दरकार ता कहबो जोटा इंपोर्टेंट लागुची से अनुसार डिस्कशन करिवो इकोनॉमी ए तीनटा रो चार्टर में बेसिक क्वेश्चन आसीबो देन डिस्ट्रिक्ट रो आउ क्वेश्चन आसी पर अबाउट प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज जदी कि बड़ कवि लेखक अछंती मन कर जगतसिंहपुर आसी सारला दास ऊपर क्वेश्चन आस पर विभूति पटनायक ऊपर क्वेश्चन आस पर बा जदी किछि इंपोर्टेंट प्रोफाइल अछि बा किछि इंपोर्टेंट मंदिर अछि मस्जिद अछि चर्च अछि कि बिरजा मंदिर अछि सारला मंदिर अछि जगन्नाथ मंदिर अछि टूरिस्ट प्लेस जहा जहा अछि निज निज जिल्ला मान करे से टूरिस्ट प्लेस ऊपर पढ़ी कि जीवो इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऊपर पढ़ी कि जदी किछि इंस्टीट्यूशन अछि इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऊपर जणा थाए नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन फॉर एग्जांपल कटक रे तुम पतरा गला कटक रे कोन कोन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस अछि पतरा गला हटात तो फास्ट कह दरकार कि सर ओपीएससी ऑफिस टा होची कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को आर्टिकल कह दो तापर हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस तुम जिल्ला रे कोन अछि मन कर ढेंकानाल रु आसी तो ढेंकानाल रे कहबो अछि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन अछि बा टू संबलपुर आसी आईआईएम अछि ई सब इंपोर्टेंट कोठी कोन कॉलेज अछि यूनिवर्सिटी अछि से सब जानिथियो निज डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल लखि के आसीबो यार कंप्लीट डाटा तुमको ऑनलाइन मिल जिवो district.nic.in रे मिल जिवो से डाटा कलेक्ट करी पढ़ि आसीबो इन द सेम वे ओडिसा रा हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी डेमोग्राफी या पर पढ़ियो नेचुरल कैलामिटी ये सब ऊपर पढ़ियो ओडिसा रा इंपोर्टेंट पर्सनालिटी पॉवर्टी एलिवेशन माओवादी मान ऊपर पढ़ियो केबी के रीजन ऊपर पढ़ियो देन क्वेश्चन अबाउट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पता व्हाई दिस ऑप्शनल हाउ कम ज्योग्राफी ऑप्शनल will help you as a bureaucrat how come public administration will help you
ताको आंसर दबो सेमती कि ज्योग्राफी रे मु एई फैक्टर पढी ज्योग्राफी इज नॉट ओनली अबाउट क्लाइमेटोलॉजी जियोमॉर्फोलॉजी दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी पॉलिटिकल ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी सेटलमेंट ज्योग्राफी so as an OS officer as a bureaucrat I have to know about agriculture industry demographic pattern cultural settings settlement of a particular region until and unless I am aware about all these things I cannot implement the welfare related schemes so that's why geography is important geography ମୁଁ ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ରଖିଥିଲି ସେମିତି ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କହିବ ସେଥିପାଇଁ ରଖିଥିଲି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ସେଥିପାଇଁ ରଖିଥିଲି ଏର ଉତ୍ତର ଦବ ସो କୋर କ୍वेଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଯାଇପାରେ ତମକୁ ଅପସନାଲ क्वेश्चन बेसिकली से थ्योरी पचारती पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पचारती मॉनसून टा केमती हुए एमती थ्योरी गोटे गोटे पचार दे पारन ज्योग्राफी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किछि जो थ्योरी अछि सब नीड एंड हायरार्की थ्योरी एमती क्वेश्चन पचारि परिबे पॉलिटिकल साइंस रे सेमती गोटे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पचारि परिबे लेट्स से देयर इज अ टसल बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर एटी कोन होवा दरकार सो ए टाइप रो किछि क्वेश्चन को प्रिपेयर हे कि जीवो ऑप्शनल then question from educational background आसी पारे जहाँ पढ़िଛ ता पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़िଛ पचारि पारନ୍ତି what do you mean by transmission loss बा बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी के आसीछ गोटे वायरस आ बैक्टीरिया ऊपर कोन डिफरेंस को एमदी क्वेश्चन आसी पारे सब देन करंट अफेयर जहाँ करंट रिलेटेड इशू चली थिवो से समय सेटा पचारे कि एटा करंट रिलेटेड इशू चलची एटी व्हाट आर योर व्यूज सो करंट इशू रे बेसिकली ओडिशा ऊपर पचरा जाय बा इंटरनेशनल अफेयर ऊपर पचरा जाय नेशनल लेवल लु टिके कम पचरंती सो इंटरनेशनल अफेयर और करंट अफेयर ए दिटा टिके भलो देखि दो जहाँ जहाँ चली थिवो इन द लास्ट 1 मंथ एबेटू देखिले हे जीवो बा लास्ट 15 दिन पेपर पढि देले मध्ये हे जीवो एई टॉपिक इंटरनेशनल इश्यूज को टिके बेसी फोकस करिवो नेशनल न पढिले एतेटा चलिवो पढिवो बट बेसी इंटरनेशनल लेवल क्वेश्चन आसे आ लोकल क्वेश्चन गुडा आसे ओडिसा बस तले एरियाज ऑफ फोकस कोन को फैक्टर इट फोकस करिया दरकार वर्तमान जहाँ जहाँ डिस्कस करले फर्स्ट ड्रेसिंग सेंस स्माइल कहि बारंबार एटा मन रख सामान्य हसी की जीव सामान्य हसी सेमती हसतो आसियो the way you talk the way you answer is important how do you accept the reality when you are not able to answer a question that is important when you don't know answer how do you handle the board that is also important so these are the areas of focus याकू केबे भी मनर भूलिबोनी आई कांटेक्ट स्माइल मन रखता सब बेले करथियो so be confident ethical हबो स्ट्रांग स्टैंड नो इजल दउच स्ट्रांग स्टैंड नो तो स्ट्रांग नो कि मते एतिक ई जिंसटा मु कहूची ई टॉपिक रे ई परिप्रेक्षी रे मते या कहिवार अछि आ सेटा ठीक कि भूल त प्रमाण करि कर चलियो तापर हिंट देके चलियो स्ट्रांग एतिक जिंस को फोकस करिया दरकार ताले जहा जहा सिखिला को इंप्लीमेंट केमति करिवो प्रथमे ये स्लाइड को देखि दबा उथरे पढि दबो कथर रीडिंग मारि दबो तापर जहा जहा पॉइंट लिखा है जे से पॉइंट ऊपर समस्त आंसर क्वेश्चन आंसर लिखिवो पूरा लिटरली लिखो पेन पेपर बाहर करी तो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल लेखो इंट्रोडक्शन लेखो तापर स्टेट प्रोफाइल लेखो सब लेखिवो तापर हमें कोन करबा ए सब सरिला परे मोटू चेक करे न जोडा लागु छी कि रिलेवेंट बा आसु नै ताको चेक करे न मोटू गोड थरो कि कोन कोन आउ दिन वा दिन ऐड करबी सबट्रैक्ट बा डिलीट करबी से जिनसटा हमें चेक करबा चेक हला परे हमें मॉक इंटरव्यू करबा सो 3-4 टा मॉक इंटरव्यू दे देला परे यू विल कंप्लीटली कॉम्पिटेंट एनफ टू अपीयर बिफोर द बोर्ड यदि कहार के क्वेश्चन अछि स्पेसिफिक क्वेश्चन ताले पचार स्पेसिफिक क्वेश्चन जदि अछि कार केति ताले पचार मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर आउथर कहि दोउची लेट योर डिस्कशन बी एन इंटेलेक्चुअल डिस्कशन इनसाइड द इंटरव्यू हॉल always talk about the constitutional values talk about development talk about welfare schemes talk about the farmers talk about the vulnerable section upliftment of the society socio-economic development of the society human rights of the vulnerable section ये जो पॉइंट गुडा का कहली मन रखता ये जो 10टा 15टा कीवर्ड कहले रिमेंबर दिस कीवर्ड्स भलो भाबरे ये कीवर्ड को मन रखि कि जीवो एट एनी कॉस्ट तुमको मन रख ये कीवर्ड यूज करिवार अछि बोर्ड क्वेश्चन किछि भी पचारो ई टर्मिनोलॉजी को यूज करियो काहे कि ना बारंबार मु कहि आंसर लिखला बेले मु कहितली मन थियो जदी कीवर्ड इंपोर्टेंट इंटरव्यू बोर्ड रे मध्ये कीवर्ड इंपोर्टेंट ए जो 10 कोटीटा कीवर्ड अछि से कीवर्ड को पूरा मन रखि के जाइथिबो कोनोसी ना कोनोसी उत्तर रे खंजिबो सो ऑल ऑफ सडन तो सेठी खंजी कहि परिबोनी तनो प्रिपेयर हे के जिबा हम आगु ना हम प्रिपेयर हे के जिबा आगु तनो एबे जो आंसर लिखिबा से आंसर रे कीवर्ड समस्त आंसर थिबो मो इंट्रोडक्शन आरंभ करि कि लास्ट पर्यंत से आंसर भीतर सब गुडा को रखिबो ए कीवर्ड को भरि के लिखिबो आंसर गोटे 2 दिन भीतर मैक्सिमम सारिबो ताको हम रिव्यू करबा चेक करबा 2-3 दिन भीतर मैक्सिमम 2-3 दिन भीतर मॉक इंटरव्यू स्टार्ट करबा 1 to 1 मु डिस्कस करबी गोटे जन सहित बसि कि कोन बोलेला कोन ठीकला तापर मॉक इन द सेम मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर
ଆଉ कीवर्ड भूलिले तुम जाई कि हापाजार्डी कैजुअली इंटरव्यू देके आसले किछि होनी यार छोड़ कॉपी के आसले थिंकिंग अबाउट मेंस रिजल्ट बी पॉजिटिव जहां आसीओ मेंस रिजल्ट एतर व्यस्त बार कोन अछि हां पेन गोटे रखिबो जनरल पेन गोटे नॉर्मल गोटे पेन रखिथिबो ना पॉकेट रे थर्मल पेन गोटे रखिथिबो पॉकेट आउ किछि क्वेश्चन तेणु एतिकी पॉइंट ऊपर प्रिपेयर हो तापर क्वेश्चन स्पेसिफिक जनक माने प्रोफाइल नै कि बायोडाटा नै कि एटा चेंज हे जिवो प्रोफाइल और बायोडाटा नै कि एटा सरी जिवा परे एतिकी जिंस जति कहली सेतिकी लिखि देला परे हम प्रिपेयर हे जिवा परे तापर हम बायोडाटा फॉर्म गोटे दे देबी से बायोडाटा फॉर्म भरिबो बायोडाटा फॉर्म बढ़ी सारिले बायोडाटा रो फॉर्म टा पढ़ी सारला परे मॉक इंटरव्यू देला पर जानि परिबो क्वेश्चन केमदि एमर्ज होछि रिसेंट स्कीम्स रिगार्डिंग हाँ स्कीम गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर रही गला मैं खाली सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर ऊपर कहली मन रख स्कीम गुडा को जहां अछि जत्ते स्कीम पारियो पढि दो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहां स्कीम अछि सब पढियो इंटरनेट रे मिल जिवो सब रिसेंट स्कीम्स बोथ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहां अछि सब पढियो एटलीस्ट जानि थिबो स्कीम टा को रिलेटेड 100 टा पाखापाखि स्कीम पढियो पाखापाखि 100 टा स्कीम पढि कि जो हैला मिनिस्ट्री वाइज स्कीम सब मिल जिवो ऑनलाइन मिल जिवो सब मिनिस्ट्री वाइज डिपार्टमेंट वाइज सब मिल जिवो तेणु एते वर्तमान रहला तुम ऊपर बर्डन कि जो जो टॉपिक डिस्कस करले से टॉपिक सब सारा पढ़ी कि ताकू लेख आज ये पीडीएफ टा मु दे देबी से पीडीएफ को रेफर करके सब क्वेश्चन गुडा कर आंसर लिखि दियो लिखिला परे हमें गोटे पर गोटे सेशन 1 to 1 करिया तेणु जल्दी टिके लिखिबो गोटे लास्ट आड़ को समस्त रखिबोनी समस्त एट टाइम हे गले गाइड करियो प्रॉब्लम हो तो गोटे गोटे जते जल्दी सारले मु गोटे गोटे करके सार देबी बसी कि जनक सहित ठीक अछि ताले आई एम वाइंडिंग अप द सेशन नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स विल हैव 1 to 1 डिस्कशन सेतरे हमें डिसाइड करिया कार केमि पर्सनल डेवलपमेंट हो एटाला जनरल जिंसो कहि देली समस्त पई समान तापरे स्पेसिफिक पॉइंट जहा जा का पई कोन ऐड होबोनी सेटा हमें 1 to 1 डिस्कशन ने करिया एति की फर्स्ट प्रिलिमिनरी वर्क करके आसा एटा टाइम लागिवो 2 दिन लागिवो पाखा पाखी 12 घंटा लागिवो एति की सारिया पई भलो भाबरे 10-12 घंटा मिनिमम लागिवो को भलो रे सारिले जति की टॉपिक डिस्कस कर तेणु आपको सारा प्रथम ठीक है सॉल्व फॉर दिस सेशन देन थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट हम बर्तन कर दो स्लाइड टा शेयर थैंक यू